Hello everyone, welcome you all and I hope you are all doing well. So in this video we are going to see one of the most important long answer question from the integration. ठीक है. So पिछले वीडियो में हमने इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें cos x था. इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर sin x है. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए, तेलंगाना बोर्ड एंड एपी बोर्ड के लिए. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने cos x को जैसे सॉल्व किया था, similar way we have to solve this question. Means what? Whenever we have the integral in this form 1 divided by a cos x plus b sin x plus c into dx, we have to consider some substitution. What the substitution is? We have to consider what? Tan x by 2 equal to t. Tan x by 2 equal to t. Okay. By applying the half angle formula, I can write a sin x as 2t divided by 1 plus t square and cos x as 1 minus t square divided by 1 plus t square and dx as, okay, after differentiating what I get, 2 divided by 1 plus t square into dt. Okay, this is our substitution we have to consider whenever you have this type of integral. Okay, now based on the problem we will substitute our corresponding substitution. So what we get, integral 1 divided by 4 plus 5. So in the place of sin x, can I write 2t by 1 plus t square? So I'm writing as 2t divided by 1 plus t square into dx. In the place of dx, what we have to write? This we have to write, that is 2 divided by 1 plus t square into dt. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 2 को इंटीग्रल के आउटसाइड लेकर लिखेंगे और इन द डिनोमिनेटर वी विल टेक द एलसीएम. तो व्हाट विल बी द एलसीएम? नथिंग बट 1 प्लस टी स्क्वायर इज एलसीएम. इसके नीचे 1 होगा. नो क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हाट डू गेट? 4 1 जा 4 प्लस 4 into t square will be 4t square plus 5 2 जा 10t into 1 divided by 2 is outside the integral, 1 plus t square into dt. Okay, now how to solve this problem? You see, this term gets cancelled. So what is left? 2 1 divided by, it will be 4t square plus 10t plus 4 into dt. ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होगा. वो कैसे मैं आपको बताऊंगा सिंपल मेथड में. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये जो फॉर्म है ना, इसे हमें a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा इन ऑर्डर टू गेट अवर स्टैंडर्ड इंटीग्रल. ओके, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. तो पहले कंसिडर करें डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, देखिए 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4. ओके, तो यहाँ पे स्टेप्स याद रखना है. फर्स्ट स्टेप व्हाट हमें फॉलो क्या करना होगा, व्हाट एवर देयर इन द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर we have to completely multiply and divide by that, or we can take 4 as common. Means whatever the coefficient of t square is, t square का जो भी coefficient हो उसे हम common लिखना होगा. So क्या करेंगे हम 4, ओके, इस कॉमन, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10/4t. मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो सॉल्व कर रहा हूँ. ये हो जाएगा 4/4. ओके, डायरेक्टली आई कैन राइट 1 बट आई एम शोइंग हाउ टू टेक कॉमन. ओके, तो क्या करना होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हमें कॉमन निकालना होगा, या यहाँ पे जो भी नंबर हो उसे मल्टीप्लाई करें और साइमल्टेनियसली डिवाइड करें. ओके, सो ये क्या बन जाएगा, 4 इज एज इट इज, दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5t by 2 plus this will be 1. 4 4 gets cancel, answer is 1. ठीक है, तो जब आप इसको हम कोएफिशिएंट कॉमन लेते हैं, a ऑलवेज हमारा होगा t. ओके, अगर आप ये स्टेप को फॉलो करते हो तो a हमारा क्या होगा, t. हमें a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लाना होगा, तो b क्या होगा, b इज नथिंग बट, आपको क्या करना होगा, तो t का जो कोएफिशिएंट है, t याद रखें, t का जो कोएफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करें. तो t का कोएफिशिएंट 5/2 है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 5/4. ओके, ये बन जाएगा व्हाट, 5/4. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हमें क्या करना होगा, a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, मगर ये जो टर्म है यहाँ पर नहीं है. तो अब हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जो b है इसका स्क्वायर कर कर इस इक्वेशन में ऐड करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट भी करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा कैसा. ये टी स्क्वायर एज इट इज दिस 5t/2 एज इट इज, प्लस मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर
मीन्स 5/4 होल स्क्वायर मैंने ऐड किया, अब माइनस करूंगा, माइनस 5/4 होल स्क्वायर। ओके, और ये जो 1 है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, आई रिपीट वन मोर टाइम। फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, वॉट एवर देर इन द कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यू हैव टू टेक दैट कॉमन, we will get this step. Okay, after getting this step what we have to do, we have to take a always as t. Okay, what about b, whatever coefficient of t is there we have to divide by 2 always, we will get what, 5/4. Okay, so this, in third step what we have to do, we have to square it and add and subtract to this equation. तो अब ये क्या बनेगा, देखिए दिस 4 is as it is a square प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर ये भी टर्म है, हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो माइनस 5 स्क्वायर विल बी 25/16 प्लस 1। ओके, और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 एज इट इज t प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस टेक द एलसीएम एज 16 minus 25 plus 16. Okay, so what we get, 4. Okay, now this t plus 5/4 whole square, this will be minus 25, minus 25 plus 16 will be 9, and 9/16, so can I write like this, minus 3/4 whole square. Okay, 3 square will be 9, 4 square will be 16. Okay, so now this is in our one of the standard result. What is that, integral 1 divided by x square plus a square into dx is nothing but 1 by, it is here we have minus, no, so it is minus x square minus a square, so 1 by 2a log of x minus a by x plus a plus c. Okay, if you get plus here, so it will be 1 by a tan inverse of x by a. So here we have minus, negative is there, so the formula changes as 1 by 2a log x minus a by x plus a plus c. So what is x, this is x, this complete bracket is x, and this is a. Okay, so now if I write here, what you get, you see integral 1 divided by x. Okay, can I write this 4 t plus 5/4 whole square minus c, in the place of this denominator I simplified, I'm writing this, so it will be what, 3/4 whole square into dt. Okay, now if you compare with this, so it is, this is will be my x, this is my a. Okay, so I have to write this, what you will get, this remove 4 outside the integral, this 2/4. Okay, 1 by 2a, a here is nothing but 3/4 log of mod x minus a. X, what is x, complete in the bracket, that is t plus 5/4 by, here minus a also is there, minus a is nothing but 3/4. Okay, now x is nothing but t plus 5/4 plus a is nothing but 3/4. Now this will be plus c. Now simplify, what you get, this 2 ones are 2 twos are, so this is 1 by 2, this 2 ones are 2 twos are, so 3/2 can be written as 2/3 log of. Okay, now take LCM, what you get, 4 is the LCM, you get 4t. Okay, now 5 minus 3 will be plus 2. Okay, so in denominator also take the LCM as 4, what you get, 4t plus 5 plus 3 will be 8. This is incomplete in the mod and this plus c. I hope you understand this step. What I have done, I have taken the LCM. This 4 gets cancelled. So what I get, this 2 gets cancelled. It became 1 by 3 log of, can I take 2 common? So if I take 2 common, it will be 2 2s are 4, 2t plus 1 will come. In the denominator also, if I take 2 common, it will become 2t plus 2 4 the 8, 4. And this plus c. This 2 gets cancelled. What is t? What we have considered t? Here t is nothing but what? Tan x by 2. So wherever t is there, in the place of t, I will put what? Tan x by 2. So what we get, you see, which implies 1 by 3 log of 2. In the place of t, I am writing tan x by 2 plus 1 divided by 2 tan x by 2 plus 4
this will be plus c. So this is my final answer for our given integral. Thank you.